Okay, so good evening, everyone. Today we will read Abrotanum. Okay, you can see the plant of Abrotanum. Okay, in the picture you can see the plant of Abrotanum. This is Abrotanum plant. Okay, so which part of this plant is used in the preparation of medicine? Can anyone tell? Can anyone tell? Generally, phrase leaves and stem is used in the preparation of medicine. So you will get question from here. यहाँ से एक question आता है कि एब्रोटेनम का कौन सा पार्ट यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए? वेरी गुड प्रतिमा. So that is phrase leaves and stem. Okay. And this medicine is prepared under class 3. Okay. Class 3 में होता है इस मेडिसिन का प्रिपरेशन. ठीक है, यहां से भी अगला क्वेश्चन आता है कि इन विच क्लास दिस मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड, सो आंसर विल बी अंडर क्लास 3. ओके, सो दिस मेडिसिन इज प्रूव्ड बाय a person. The name of the person is Deventer, Gatchel, and Cushing. There are three persons. They have proved this medicine. Okay, so we have to keep in mind. Okay, and before starting to this medicine, first we'll talk about the introduction. This is a very valuable remedy. Should be more frequently used, especially when the rheumatic condition with a heart irritation. This is said by Dr. James Tyler Kent in his book. The name of the book is Lectures on Homeopathic Materia Medica, which was published in 1904, which is containing 187 medicine. केंट का जो बुक है उसका नाम है लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका. कई बार क्वेश्चन आता है कि लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका इज रिटन बाय, सो आंसर विल बी जेटी केंट और जेम्स टाइलर केंट. कब आई थी? 1904 में आई थी. ओके, 1904 में, 1904 it came. Okay, and how many medicine it contains? 187 medicine. Kent Materia Medica में कितने medicine है? So 187 medicine. Okay, so suppose if the patient is coming to you and that patient is having a rheumatic complaint associated with the heart irritation, and epistaxis and bloody urine and anxiety and trembling is there, when there has been a history of a diarrhea. यदि कोई पेशेंट आता है उसको र्यूमेटिक कंप्लेन है, र्यूमेटिज्म है, र्यूमेटिज्म के साथ हर्ट कंप्लेन है, एंड द पेशेंट इज हैविंग अ ब्लडी यूरिन, हाँ एंजाइटी भी है, ट्रेम्बलिंग भी है, उसके साथ अगर आता है, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन. बट वी हैव टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ डायरिया मस्ट बी देयर. उसको हिस्ट्री होना चाहिए कि पेशेंट बहुत साल से डायरिया से सफर हो रहा था, उसके बाद द पेशेंट हैज डेवलप a rheumatism and having the heart complaint along with that, then only we can think about this medicine. And in this medicine we will find especially marasmus of children is there. It is very useful remedy and it is not unfrequently indicated, and this emaciation especially beginning in the limbs and gradually it will going upwards, it will spread upward. क्या होता है? पैरों से स्टार्ट होता है इसका इनिशिएशन. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेग. ओके, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेग एंड इट विल बी spread to the whole body. Okay, and totally opposite to the lycopodium, natrum mur and sorinum. क्या होता है? पैर से अगर इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा है और ऊपर बॉडी की तरफ जा रहा है तो एब्रोटेनम मेडिसिन होगा. बट अगर ऊपर बॉडी से स्टार्ट हो रहा है और नीचे लेग तक जा रहा है, then only we can think about the lycopodium, natrum mur and sorinum. Okay, so this was the introduction which is said by James Tyler Kent in his book. The name of the book is Lectures on Homeopathic Materia Medica. So this medicine is commonly known as southern wood and ladies love. This is known as ladies love. इसका दूसरा नाम है ladies love
and southern wood. Sometimes you will get question. कई बार question आता है कि ladies love is the common name of which medicine? So answer will be Abrotanum. And southern wood is the common name of which medicine? Then again answer will be the Abrotanum. Okay. And who has proved? I have already told. And this medicine is prepared under class 3. So we have to keep in mind. And for the preparation of medicine, Abrotanum का generally fresh leaves and fresh stem use किया जाता है. Okay. Fresh stem and fresh leaf is used in the preparation of medicine. ये भी question आता है. Okay. So just try to remember. Now we'll talk about the symptoms of abrotinum. Alternate constipation and diarrhea and lienteria. You can see in the picture. इस पिक्चर में आप देख सकते हो कई बार जो पेशेंट आएगा डॉक्टर साहब मुझे कब्ज हो रहा है कब्ज हो रहा है समटाइम्स द पेशेंट विल एक्सप्लेन आई एम सफरिंग फ्रॉम indigestion and sometimes it will be saying that I am not having a bowel motion 2 दिन से मुझे पैखाना ही नहीं हुआ लेटरिन ही नहीं हुआ and what the patient has eaten in the yesterday night जैसे एक दिन पहले क्या खाया you will able to see in the next morning like कल अगर रात में उसने पनीर खाया है तो in the next morning you will able to find the paneer when he will pass the stool खड़ा पनीर निकल जाएगा why because there was word mentioned lienteria means undigested stool okay undigested stool he will pass okay but this point we can correlate alternate constipation and diarrhea we can correlate with the practice of medicine with a disease condition कौन सी बीमारी में ऐसा सिम्टम होता है कैन एनीवन टेल कौन सी बीमारी irritable bowel syndrome yes very good IBS yes very good IBS very good Padmalya very good IBS irritable bowel syndrome and Crohn's disease is there okay in this condition you will find alternate constipation and diarrhea okay ये दो बीमारी मिलता है okay we have to keep in mind okay at this point again we can correlate with the organon of medicine so where we can correlate in organon of medicine we can correlate with the alternating action okay alternating action से हम लोग correlate करेंगे so where it is given alternating action कहाँ पे दिया organon of medicine में can anyone tell where it is given alternating action aphorism number 115 okay and this is the question has been asked कई बार क्वेश्चन आता है ऑर्गेनन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेटिंग एक्शन वेयर इट इज गिवन इन विच एफोरिज्म इट इज गिवन सो आंसर विल बी 115 ओके 115 में होगा ठीक है एंड एग्जांपल्स ऑफ अल्टरनेटिंग एक्शन इज गिवन इन विच एफोरिज्म एग्जांपल्स कहां दिया है इसका 251 yes very good 251 very good excellent 251 but can anyone tell me what are the examples brainia rustox okay rustox Ignitia, ignis belladonna, ignitia very good Aryan and belladonna so we can remember as brief okay short में याद कर लेना brief this is mnemonic okay and this is the example of alternating action जैसे ये alternate है तो action की हम बात कर रहे हैं action okay alternating action so it is given in 115 but examples is given in 251 what are the examples brainia belladonna rustox and ignitia okay these are the examples and at this point again we can correlate with the alternating disease where it is given in organon of medicine can anyone tell alternating disease कहाँ पे दिया organon में 232 कई बार क्वेश्चन आता है alternating disease where it is given so answer will be 232 okay so keep in mind okay but this alternate constipation and diarrhea we can correlate with the Kent repertory and if you are talking about the Kent repertory this repertory was for the first time published in 1897 second volume कब आया can anyone tell second edition कब आया Kent का yet 1908 very good third कब आया
1924, Yes, very good. And fourth? 1935, Yes, fifth 1945, and sixth? 1957, Yes, 57. 1961, Yes, very good. And 1974. okay. So this is the 57. 1957 is the most important. Okay. This is known as Chicago edition. Okay. Chicago edition इसको बोलते हैं या American edition भी बोलते हैं. Okay. American edition. And this 61, 1961, this is known as Indian edition. Question आता है Indian edition of Kent Repertory was published in 1961. And this is the final one. Final Kent Repertory. Okay. Final Kent Repertory. This is 74. And this Kent Repertory containing how many chapters? 37 chapter होता है. Okay. So keep in mind, which is starting from the mind and ending with the generative chapter. So where you will find this alternate constipation and diarrhea? कहाँ पे मिलेगा? किस चैप्टर में मिलेगा रिपर्टरी के? Under rectum chapter you will find. And this was the question has been asked in AIPGET 2025. Okay. अभी इस साल क्वेश्चन आया था. ये क्वेश्चन आया हुआ था AIPGET 2025 में ये क्वेश्चन आया था. ओके. तो इसको आप लोग ध्यान रखो. Another symptom is there. Marasmus of children with marked emaciation, especially of a leg. The skin is flabby and hangs loose in folds. Suppose you can see in the picture, the patient is having a legs are too thin. आप देख सकते हो हाथ पैर इतने पतले, especially legs, they are very thin. Why this patient is having emaciation? Because this point again I want to correlate with the practice of medicine. Okay, with disease condition like PEM. PEM से हम लोग कोरिलेट करते हैं. PEM. ओके. PEM प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. ओके. तो इसके वजह से क्या होता है? दो बीमारी होती हैं, मैरेस्मस एंड क्वासिओरकर. ओके. क्वासिओरकर. ओके. दो बीमारी होती हैं. ओके. The patient is having a problem which is related with the PEM. Okay. So that's why this patient is having marasmus, especially in the lower extremities. And if we are comparing with the marasmus, कई बार क्वेश्चन आता है marasmus and क्वासिओरकर का. Okay. So this marasmus is looking like a मरा हुआ, म से मरा हुआ, म से marasmus. Okay. ऐसा लगेगा. But this patient will be very active. ये पेशेंट क्या होता है? बहुत एक्टिव होता है. ओके. एंड दैट पेशेंट विल बी हैविंग ओबेसिटी. ओके. ओबेसिटी होगा तो क्या होगा? ये स्लगिश होगा, सुस्त होगा. व्हाई दिस पेशेंट? बिकॉज दिस पेशेंट विल बी हैविंग हिपैटोमीगैली. इसको क्या होगा? हिपैटोमीगैली होगा. लीवर इसका बड़ा होगा. हिपैटोमीगैली. ओके. हिपैटोमीगैली इसको होगा. तो अंडरस्टैंड व्हाई दिस पेशेंट इज हैविंग अ मैरेस्मस. Especially why? Because this patient is suffering from the PEM, protein energy malnutrition. अब क्या होगा? प्रोटीन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? स्किन विल लूज. स्किन क्या होगा? ढीला पड़ जाएगा और लटकेगा वो स्किन. इट विल बी हैंगिंग डाउन फ्रॉम द bodies. Okay, so we have to keep in mind. But if there is a marasmus, especially neck, अगर marasmus neck में होता है तो which medicine? पतला नेक है एकदम. देखो ऐसे पतला, बड़ा Tramure, सर. Yes, very good. Netramure, very good, Aryan. And Netram. Sanicula, Yes, very good brain. सैनिकुला. दो मेडिसिन है जिसका गर्दन पतला होगा. देखना अपने फ्रेंड्स के बीच में. समटाइम्स यू विल फाइंड देयर विल बी अ इमेशिएशन ऑफ नेक. गर्दन जो होता है एकदम पतला होता है, पाइप की तरह छोटा सा पतला. ओके. सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ नेट्राम्यूर पेशेंट एंड सैनिकुला. लेकिन इफ देयर विल बी अ शॉर्ट नेक मतलब बहुत छोटा गर्दन होता है, तो विच मेडिसिन? शॉर्ट नेक, CP and calcarea card. शॉर्ट नेक, that is कैली कार्ब और कैली बाई, कैली ग्रुप यू विल फाइंड. ओके. शॉर्ट नेक किसका होता है? कैली ग्रुप का होता है. ओके. सो जस्ट ट्राई टू कीप इन. लॉन्ग किसका होगा और इमेसिएटेड किसका होगा? नेट्राम्यूर एंड सैनिकुला. बट शॉर्ट नेक होगा, दैट इज अ कैली बाई. ओके. कैली ग्रुप, कैली बाई. ओके. सो कीप इन माइंड. ओके. But if you are talking about the marasmus of lower extremities only,
this point again we can correlate with the Kent repertory. So under extremities chapter you will find, under extremities chapter you will find this marasmus. Okay, अंडर एक्सट्रीमिटीज चैप्टर ऑफ केंट, केंट में कहा मिलेगा, एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में मिलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो कीप इन माइंड. ओके, in marasmus heat weak and cannot hold it up. You can see this patient cannot control his heat. Why? Because I have already told that this patient is suffering from the PEM, protein energy malnutrition. If there will be a no protein, तो क्या होगा, कैल्शियम भी नहीं absorb होगा, and if there will be a no absorption of the calcium, so the patient will be suffering from the, so the patient will be suffering from, so the patient will be suffering from the weakness, and weakness of neck you will find. Okay, and that's why this patient cannot control the head. Okay, so generally we can think about this medicine. Another medicine is also there. You can see another medicine is also there who cannot control the head. Can anyone tell which medicine? Calcarea phos. Calcarea phos, very good. And Calcarea phos and Ethuja synepium is there. Okay, Ethuja synepium. Okay, in that condition the patient cannot hold the head. Okay, okay, but sometimes this point we can correlate with the anatomy. Which bone is most prominent, especially in the cervical region? Can anyone tell? ये क्वेश्चन आता है, which bone is most prominent in the cervical region? Anatomy से क्वेश्चन आता है. Can anyone tell? Axis. C6, C7, sorry, C7, you will find there is the most prominent. Okay, this is the question. Okay, so you have to keep in mind. Okay, ये इसको आपको याद रखना है. कई बार क्वेश्चन आता है सर्वाइकल रीजन में कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट बोन होता है, सो C7. ओके, another symptoms. The most prominent symptom of abrotanum is the wasting. It causes most marked in the lower extremities. I have already discussed. Suppose if the patient is coming to you, then only you have to look in the lower extremities. कोई भी पेशेंट अगर बच्चा आता है तो उसके पैर में देखना है, नीचे, एकदम नीचे. Then you will understand this patient is a abrotanum patient. Why? क्यों ऐसा होता है abrotanum patient? Because उसका पैर में सूखा सूखा दिखेगा, एकदम पतला पैर दिखेगा. This patient will be having leg emaciation is there, especially in the lower extremities. Why? Because this patient is suffering from protein energy malnutrition. इसलिए ये क्या होता है, पतला पैर होता है. And you have to find, you can see in the picture, there is emaciation of the leg is there. Then only we can think about this abrotanum medicine. Okay. Marasmus of lower extremities I have already described. Okay, and painful contraction of the limbs from cramps or following colic is there. Why this patient will be having a painful contraction of the limbs? Because sometimes this patient is having a diarrhea. History of diarrhea you will find, बहुत ज्यादा पेट खराब हो रहा है, पानी जैसा एकदम डायरिया हो रहा है, डायरिया. एंड इफ देयर विल बी अ मोर डायरिया तो क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा. सो देयर विल बी अ सो मच डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, पोटेशियम एंड सोडियम. दैट्स व्हाई यू विल फाइंड there will be a contraction, painful contraction of the limb you will find. Okay, and the patient will be having, along with that, the colic is there. Then only we can think about this medicine, Artemisia abrotanum. Okay, ravenous hunger, losing flesh while eating well. You can see भुक्खड़, जिसे हम कहते हैं भुक्खड़, खाना 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 चाहिए, खाना चाहिए. The patient is saying that I want food, food, food. मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए. खाएगा तो जरूर, लेकिन लकड़ी की तरह होगा, सूखा होगा. He will be a lean thin emaciation you will find. And why emaciation? खाता तो बहुत है, लेकिन उसका पीएम का प्रॉब्लम है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है. इसके वजह से क्या होगा, वो दुबला पतला रह जाएगा. एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी अ वीकनेस ऑफ बोन यू विल फाइंड, वीकनेस ऑफ bone you will find in this patient. And Dr. Cyrus Maxwell Boger, he has mentioned about this hepatite. He said that
Abrotanum is having a morbid appetite. Morbid appetite. किसने मेंशन किया है? साइरस मैक्सवेल बोगर ने. Okay. He said that morbid appetite. Morbid appetite. Okay. This is said by C.M. Boger. Okay. C.M. Boger. In his book, the name of the book is Synoptic Key to the Materia Medica. Okay. Synoptic Key to Materia Medica. Okay. तो व्हाट ही सेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्बिड एपेटाइट? कोई बताएगा मॉर्बिड एपेटाइट का मतलब क्या होता है? The morbid appetite means the patient wants food, food, food. Even the patient is dying because of food. Even the patient is having so much food. Even मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए. That is the morbid appetite. Even the patient is suffering from severe kind of problem. ऐसा लगता है कि मर रहा हो पेशेंट, लेकिन उसको खाना चाहिए. चाहे उसको कैंसर है, चाहे कुछ भी हो, उसको खाना चाहिए. That is the meaning of morbid appetite. Okay. But if the word is mentioned morbid appetite, but this point we can correlate with the organ of medicine, where Dr. Hahnemann has mentioned about morbid phenomena. कहाँ पे हैनमैन ने बोला है morbid phenomena? In which aphorism? Aphorism number 6. Okay, where Dr. Hahnemann has said that about the morbid phenomena. कई बार क्वेश्चन आता है where Dr. Hahnemann has mentioned about the morbid phenomena. Hahnemann ने कहाँ पे morbid phenomena के बारे में बोला है? तो aphorism 6 में. Okay, just try to keep in mind. Okay, but ravenous hunger we can correlate with the another medicine. Can anyone tell me more medicine? और क्या क्या medicine है? Can anyone tell? Staphylococcus aureus, Yes, very good. Lycopodium, Yes. Anacardium. Yes. Ravenous hunger. Iodum is there. Okay. Staph is there. Staphylococcus is there. Sulfur is there. Zincum metallicum is there. Okay. Zincum metallicum is there. Okay. Okay. So, suppose what is the difference between this medicine? एब्रोटेनम और इसमें क्या है? एब्रोटेनम एंड आयोडम में हम पहले कंपेयर करते हैं. ओके, आयोडम पेशेंट इज हैविंग अ लीन थिन इमेसिएटेड, बट दिस पेशेंट इज हैविंग अ इंपल्स. ही इज इंपल्स. इंपल्स ऐसा होता है कि ही विल किल एनीबॉडी. ही विल किल एनीबॉडी. ही कैन किल एनीबॉडी. That is a iodine patient without any intention, without any justice, without any problem. कोई भी किसी से न झगड़ा है न रगड़ा है, बस क्या होगा? मार डालेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार डालेगा वो. That is iodine, and this is said by Dr. James Tyler Kent. The name of the book is Lectures on Homeopathic Materia Medica. Okay, ये iodine में. तो why this patient is eating? Because this patient will be having anxiety. तो एंजाइटी दूर करने के लिए क्या करेगा? ही विल बी ईटिंग. खाएगा, बहुत खाएगा, बहुत खाएगा, लेकिन क्या होगा? शरीर में नहीं लगेगा. इट विल बी नॉट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. व्हाई? बिकॉज देयर विल बी अ एंजाइटी. खाली दिमाग शैतान का घर. तो जब दिमाग एंजाइटी में होगा तो कहां से उसको लगेगा? नहीं लगेगा. दैट्स व्हाई दिस पेशेंट इज हैविंग अ लीन थिन. और स्टेपिस क्रिया कैसा होता है? स्टेपिस क्रिया पार्टी हो गया उसके बाद खाना चाहिए. पार्टी अभी करके आया, बर्थडे पार्टी हो गया, फिर पूछेगा चलोगे खाना खाने? हाँ चलो चलते हैं. अगेन ही विल गो बिकॉज देयर इज मींस एक्सट्रीम हंगर इज देयर. एक्सट्रीम हंगर इज देयर फॉर द फूड. इवन द फुल ऑफ स्टमक इज देयर. पेट भरा है फिर भी खाएगा. दैट इज अ स्टेपिस ग्रिया पेशेंट. खाने के ऊपर अगर खाना खा पाता है तो स्टेपिस ग्रिया होता है. ओके. एंड सल्फर इज ऑलवेज हंगर because this point we can correlate with the miasm, sora miasm, and sora is having also hunger, especially in the midnight. You will find 11 am and 11 pm and 12 pm you will find. कई बार रात को 11-12 बजे इसको बहुत जोर से भूख लगता है. And this patient cannot tolerate his hunger. That is a sulfur. Okay. And zincum is also there. Zincum, in case of a zincum, the patient is having a ravenous hunger, but the patient is suffering from the problem which is related with the cerebral complaint. Then only we can think about this medicine. Okay. लिंक ओवर होने वाला है.
जब लिंक ओवर हो जाएगा अगेन दूसरा मैंने सेम टाइम यू हैव टू ज्वाइन विदाउट एनी डिले ओके सेम लिंक विदाउट एनी डिले यू हैव टू ज्वाइन ओके rheumatism for the excessive pain before the swallowing commences from suddenly checked diarrhea or other secretions alternates with the hemorrhoids with a dysentery. Suppose if the patient is coming to you, I have already told, rheumatism with irritation of heart, if you're finding, then you should think about the Abrotanum. अगर rheumatism के साथ heart complaint मिल गया तो हमें Abrotanum सोचना चाहिए. But we have to find the history of diarrhea. हमें history होना मिलना चाहिए. History मिलना चाहिए कि वो पहले डायरिया से सफर कर रहा था, उसके बाद कुछ इसने मेडिसिन लिया, उसके बाद ये डेवलप हुआ rheumatism complaint. Then we can think about this medicine. Okay. And sometimes this rheumatism alternates with the hemorrhoids and with dysentery. पाइल्स के साथ rheumatism हो रहा है या dysentery हो रहा है तब भी हम एब्रोटेनम देंगे. Okay. So we have to keep in mind. But here the word is mentioned rheumatism. This rheumatism or rheumatoid arthritis we can correlate with the practice of medicine. So what are the investigation we will suggest to the patient? क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे रूमेटॉइड पेशेंट को आरए वाले पेशेंट को कैन इन्वेंट टेल RF factor, anti-CCP, यस वेरी गुड ब्रेन C-reactive. आरएफ फैक्टर सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड एंटी सीसीपी एंटीबॉडी एंड रोज वॉलर टेस्ट ओके रोज वॉलर भी करते हैं ये कई बार एग्जाम में आता है और दिस वाज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन माय यूपीपीएससी इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था यूपीएससी के मेडिकल ऑफिसर में क्या डॉक्टर साहब आरए का नाम सुना है तो मैंने कहा यस सर देन ही आस्क्ड मी कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो मुझे याद था मैंने बोला कि आरए फैक्टर करेंगे सी रिएक्टिव प्रोटीन एंटीसीसीपी एंटीबॉडी एंड रोज वॉलर टेस्ट तो कहा डॉक्टर साहब अगर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा पेशेंट को अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो हाउ यू विल डायग्नोस दिस इज द केस ऑफ आरए कैन इन्वेंटेड बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे हम लोग पहचानेंगे Clinically, we can find with the Z neck deformities, one neck deformity, and bottonius. Yes, you can see in the picture. The patient is having a jet neck deformity. You can see jet neck deformity is there. And this is a swan neck deformity you will find. And this is a boutonniere deformity. तो ये तीन deformity होता है. We have to keep in mind. Okay. ये याद रखना है आपको. Okay. Don't forget because ये कई बार question आता है ये. Great weakness and prostration, a kind of hectic fever with children unable to stand. There will be so much prostration. Why this patient is having a so much prostration? क्यों इतना कमजोरी होता है क्यों इतना कमजोरी होता है because this patient is suffering from hectic fever and the fever is there and the patient is having a problem with the PEM प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा प्रोटीन का तो कैल्शियम भी नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा हड्डी भी कमजोर हो जाएगा उसका लेग्स आर टू थिन और कमजोर होगा तो क्या होगा खड़ा नहीं हो पाएगा दैट्स व्हाई दिस पेशेंट इज हैविंग अनेबल टू स्टैंड ओके so that's why this patient is having a so much weakness and prostration is there but this weakness we can correlate with the another medicine इस कमजोरी को हम लोग दूसरे मेडिसिन से कंपेयर करेंगे लाइक किससे आर्सेनिक एल्बम से हाउ वी कैन कंपेयर इन आर्सेनिक पेशेंट एक्सॉशन इज नॉट फेल्ट बाय द पेशेंट स्पेशली लाइंग इन द बेड उसको कोई महसूस नहीं होता जब तक लेटा कितना आराम लग रहा है अच्छा लग रहा है व्हेन द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बेड पे लेटा तब तक कुछ नहीं पता चलता व्हेन द पेशेंट इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम द बेड जैसे ही चलना चालू कर ओ मम्मी लग रहा है गिर जाऊंगा मम्मी गिर जाऊंगा ओ गिर जाऊंगा then we can think about this medicine this is the symptom of arsenic album okay so we have to keep in mind another symptom is that child is ill-natured you can see why this patient is looking too old because I have already told that this patient is suffering from PEM protein energy malnutrition okay इसके वजह से इसका लुक कैसा होता है 5 साल का बच्चा दिख रहा है 15 साल का वाई बिकॉज
दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द PEM, प्रोटीन एनर्जी malnutrition। तो इसका नेचर कैसा होगा? ना तो खड़ा हो पा रहा है, अब फीवर हो जा रहा है, तो क्या होगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा दिमाग से। डिस्पोंडेंट, क्रॉस डिस्पोंडेंट, वायलेंट, बहुत ज्यादा, अगर कुछ बोलेगा तो तोड़ फोड़ देगा, ऐसा होगा। वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, ऐसा होगा कि नोच देगा, फोड़ देगा, ऐसा। बट इस सिम्टम को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दूसरे मेडिसिन से, दैट इज ट्यूबरकुलिनम, ट्यूबरकुलिनम बेबी। ओके, और ट्यूबरकुलिनम बेबी कम नहीं होता, बहुत बदमाश होता है, इसलिए इसको प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी कहते हैं, और क्वेश्चन आता है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। ओके, अब ट्यूबरकुलिनम पेशेंट ऐसा होता है, ही कैन अब्यूज टू हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप को ही गाली दे देगा। तो तुमको समझ में नहीं आता, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? He will abuse, कुछ भी माँ बहन का गाली दे देगा, पेरेंट्स को भी। दिस इज अ ट्यूबरकुलिनम पेशेंट। ट्यूबरकुलिनम पेशेंट इतना बदमाश होता है कि माँ बाप ने अगर प्लान भी बनाया है ना कि गोवा चलेंगे घूमने, तो इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कि गोवा तो नहीं जा पाएंगे। दैट इज द problematic child. This is a tuberculinum, and this was the question has been asked in the IPGET exam. ओके, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन सा होता है? ट्यूबरकुलिनम होता है। ओके, बट माइजम कौन सा होता है? कैन एनीवन टेल? Tubercular masm. यस, ट्यूबरकुलर माइजम भी होता है। ओके, बट ट्यूबरकुलर माइजम किसने दिया है? JHLN। HCLN. यस, वेरी गुड, No, JHLN, CHLN. JHLN, वेरी गुड। ओके, तो कई बार क्वेश्चन आता है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन है? ट्यूबरकुलिनम है। लेकिन माइजम की बात होगा तो ट्यूबरकुलर माइजम होगा। ट्यूबरकुलर माइजम का दूसरा नाम क्या है? कैन एनीवन टेल? क्या? Pseudophora. यस, वेरी गुड, स्यूडोसोरा, वेरी गुड, वेरी गुड विष्णु, दैट इज स्यूडोसोरा। ओके, बट किसने दिया है? JHLN ने दिया है। ओके, सो यहां से क्वेश्चन आता है कि ये सारे क्वेश्चन पॉइंट हैं जितने मैंने बताया। ओके, सो वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, face old pale wrinkled, you can see, if you'll find this is looking like an old face, ऐसा लगता है बुढ़वा की तरह दिखता है, he is looking like an old man, and face pale and wrinkled, you will find wrinkle is there over the face. Why? Because this patient is suffering from protein energy malnutrition. Okay, in the bracket you will find opium is also, he will looks like, and creosote is also there, and fluoric acid is also there. ये सारे पेशेंट बुड्ढे दिखते हैं। ओके, angioma of the face, angioma of the face means this is a non-cancerous growth of the skin, you can see in the picture, this is the angioma of the face। अगर पेशेंट में if you are seeing that कि इसके फेस पे angioma है, then we can think about this medicine, but this angioma of face we can correlate with the organon of medicine। organon of medicine से हम लोग correlate करते हैं किस डिजीज से हम लोग को रिलेट कर सकते हैं? कैन एनीवन टेल व्हाट वी कैन से दिस कंडीशन? वन साइडेड डिजीज। ओके, वन साइडेड डिजीज, वन साइडेड डिजीज कहां पे दिया है? कैन एनीवन टेल? ऑर्गेनन में 235. 173, where there is a less number of symptom is there, less amenable to cure, the word has been mentioned in the aphorism number 173। कई बार क्वेश्चन आता है कि one sided disease is given in which aphorism, so answer will be 173। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही सिम्टम है, केवल यही दिख रहा है। अगर किसी को ट्यूमर हो रहा है, लाइपोमा हो रहा है, वो भी वन साइडेड डिजीज में एग्जाम्पल से ये है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन घुमा के दे देगा वन साइडेड डिजीज। सपोज इफ द पेशेंट इज कमिंग टू यू एंड दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंजियोमा ऑफ द फेस, and this point we can correlate with the organon of medicine with disease condition। अब ऑप्शन में रहेगा local disease, one sided disease, mental disease, external disease, answer one sided disease। About the angioma of the face, and we have correlated with the organon of medicine with aphorism number 173, or one sided disease। okay, another symptom is there, aggravation of hemorrhage when rheumatism improves।
Means when that rheumatism is improving, at that time there will be aggravation of the piles, that is hemorrhoids. Then we can think about this medicine. And sometimes the patient is having the sensation as if stomach were swimming in the water. You can see in the picture where the patient is feeling that sensation of stomach is swimming in the water. But if the heart is swimming in the water, can anyone tell me the name of medicine? Which medicine? Bufurana. Very good. Very good, Aryan. That is Bufurana. But if the eye is swimming in the water, eyes is swimming in the water, कौन सा मेडिसिन होगा? Squilla. Squilla is the medicine. Okay. Sensation as if eyes were swimming in the cold water. This line is written in the Billium Boric Materia Medica. Okay. ओके हार्ट इज स्विमिंग इन द वाटर. हार्ट अगर ऐसा लगता है कि पानी में तैर रहा है, देन वी कैन थिंक अबाउट द मेडिसिन दैट इज ब्यूफोराना. लेकिन अगर लगता है स्टोमक पानी में तैर रहा है तो हम लोग सोच सकते हैं एब्रोटेनम. बट अगर लगता है आंख पानी में तैर रहा है, मतलब स्विमिंग सेंसेशन एज इफ स्विमिंग, आई स्विमिंग इन द वाटर, देन वी कैन थिंक अबाउट स्क्विला इज द मेडिसिन. ओके, बट you can see in the picture, if the patient is having a dream of swimming, dream of a great exertion, rowing and swimming, which medicine? कौन सा मेडिसिन है? उसको तैरने का सपना आता है, अरे अरे कितना मजा आ रहा है, why I'm swimming, तैराकी आज बन जाएगा, ऐसा लगता है. Then which medicine we can think? Can anyone tell? The medicine is Rustox. Okay, in the LN keynotes it is written. Okay, so just keep in mind. But these symptoms we can correlate with the another medicine. Suppose if there is a sensation as if the hanging of stomach is there, then we can think about the medicine Ipecac, where clutching, gripping like pain is there about the umbilicus. Then only we can think the medicine Ipecac is the medicine. Okay. But now we will talk about the characteristic symptom. डॉक्टर J.H. क्लार्क, नेम ऑफ द बुक. कई बार नेम ऑफ द बुक पूछता है कि अ डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मेटेरिया मेडिका इज रिटन बाय whom? सो आंसर विल बी J.H. क्लार्क. ये क्वेश्चन 5 to 6 years बिफोर, ये पहले आते थे क्वेश्चन, अभी भी आ सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स द पैटर्न इज चेंजिंग. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग द नेम ऑफ द बुक. A dictionary of practical materia medica is written by J.H. Clark. Okay, so we have to keep in mind. Okay, and this book was published in which year? 1900. Okay, 1900 में आया. But J.H. Clark का रिपोर्टरी कब आया? Can anyone tell? 1904 clinical repertory. Yes, very good. J.H. Clark का रिपोर्टरी जो है 1904 में आया. ये क्वेश्चन आता है. ओके, एंड फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन इसका 1937 में आया, जो कि ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंड एडिशन ऑफ clinical repertory of J.H. Clark which was came in which year? So that is 1937. अब किसने लिखा था? रॉय एंड कंपनी ने लिखा था ये. ठीक है, रॉय एंड कंपनी, ये भी क्वेश्चन था. सो याद रखना है, भूलना नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है. जहां पे डाउट होगा यू विल आस्क. ओके, so Dr. John Henry Clark has said about the wasting. The most important symptom of the abrotanum is wasting. It causes the most mark in the lower extremities. अगर कोई बच्चा आता है, कोई भी पेशेंट आता है, अगर हमको if you are getting the symptom of marasmus, ऐसा अगर symptom मिलता है marasmus का पैरों में, then only we can think about this medicine abrotanum. Okay, what Dr. Kent has said in his book, the name of the book is Lectures on Homeopathic Materia Medica, and ये book कब आई थी? Can anyone tell? 1904. 1904 में केंट की मेटेरिया मेडिका आई है और J.H. क्लार्क की रिपोर्टरी आई थी, फर्स्ट एडिशन. ठीक है, 1904 में. सो दिस इज सेड बाय डॉक्टर J.T. Kent. ओके, डिफरेंशिएट्स emaciation begin the lower extremities and gradually upwards spreads upward, so the face is last affected. नीचे से बढ़ता बढ़ता जाएगा, फेस एकदम लास्ट में पतला होगा, एकदम लास्ट में.
बट इसके अपोजिट में क्या मेडिसिन है? लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर एंड सोराइनम इज देयर, ओके, वेयर द इमेसिएशन इज स्टार्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन इट विल स्प्रेड टू द लोअर। ये तीर नीचे जा रहा है तो मतलब ल से लोअर होता है, ल से नीचे, ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है, ओके, बट अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्रोटेनम, ओके। And if we are talking about the appetite, ravenous appetite or morbid appetite, मर रहा है फिर भी उसको खाना चाहिए, even the patient is dying, at that time the patient want the food. This is said by Cyrus Maxwell Boger. The name of the book is Synoptic Key to the Materia Medica. Okay. तो what Dr. James माने NM चौधरी is saying, this is NM चौधरी। कई बार होता है इमेज देकर पूछ देगा कि ये कौन है, NM चौधरी है, ओके, याद कर लेना। So says malnutrition is the evident from the progressive atrophy in spite of a hunger, okay. What we have already discussed about the emaciation, the patient is suffering from the PEM, patient is eating too much, बहुत खाता है खाना खाना खाना, लेकिन फिर भी दुबला होता है। This is said by NM Chaudhary, okay, so just keep in mind. And this is the mnemonic how we can remember, okay, ये mnemonic है। A for, देखो एब्रोटेनम का नाम होता है तो एब्रोटेन से हम लोग याद करेंगे वर्ड एब्रोटेन। A for alternate constipation and diarrhea, B for boys with nose bleed and hydrocele। क्या होगा? बॉयज आएगा तो उसमें हाइड्रोसील भी मिलेगा, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पिक्चर भी देखते जाना, पिक्चर में भी मेंशन है। तो बॉयज होगा, बॉयज को हाइड्रोसील होगा, देन वी कैन थिंक रैपिड इमेसिएशन एट गुड एपेटाइट, खाता बहुत है लेकिन सूखा जैसा रहता है, सूखा लकड़ी की तरह, दैट इज एब्रोटेनम। ऑपरेशन इन चेस्ट, हाइड्रोथोरैक्स एंड इम्पाइमा और इम्फाइसिमा इज देयर। ऑपरेशन होता है चेस्ट का लेकिन इम्फाइसिमा और हाइड्रोथोरैक्स का कंप्लेन है, देन वी कैन थिंक टिप फॉर tremendous weakness after influenza, if the patient is suffering from influenza and after that the patient is suffering from too much weakness, इन्फ्लुएंजा के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी हो रहा है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं एब्रोटेनम देना है। यूपेटोरियम परफोलिएटम भी मेडिसिन है, कैलिफॉस भी मेडिसिन है, एंड अनदर इज आर्स आयोड इज आल्सो द मेडिसिन, ओके। ए से अचेक्ड डायरिया फॉलोड बाय रूमेटिज्म, डायरिया के बाद रूमेटिज्म हो रहा है तो हम सोच सकते हैं, इस पिक्चर में दे सकते हो आप। एंड एन फॉर नेवल यूजिंग इन न्यूबॉर्न, मिस नेवल यूजिंग का मतलब क्या है? फ्लूइड यूजिंग फ्रॉम द नेवल, यू कैन सी इन द पिक्चर, ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर। नाभि से अगर आ जाएगा, ओके, नाभि से अगर फ्लूइड आता है, दिस इज नाभि अम्बिलिकस ऑफ अ बेबी, ओके। If the patient is having a oozing of fluid, then we can think about abrotanum. But if there is a oozing of a blood, अगर नाभि से blood आता है तो हम क्या सोचेंगे मेडिसिन? Can anyone tell? Which medicine? Calcaria phos. Yes, very good. Calcaria phos is the medicine, CP. But if there is a oozing of a urine from the navel, urine अगर यहाँ से निकलेगा तो which medicine we can think? Hyoscyamus. Yes, very good. Hyoscyamus is the medicine. Very good, excellent. Okay, and this is the relationship which is aggravated by the chest secretion, either sweat, either dysentery, either diarrhea, and aggravation from the fog. And this patient, he will be having amelioration while passing the loose stool or motion. Okay, so keep in mind. Another medicine will read, that is acetic acid, okay, that is acetic acid, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सिरका बोलते हैं, सिरका, सिरका, either we can say vinegar, okay, सिरका का यूज अचार में करते हैं ना, ठीक है, that is acetic acid, okay. And if you are talking about the acetic acid is commonly known as glacial acetic acid and vinegar, and this is introduction is given by Herring and proved by Berries, okay. बट बेरीज का एक रिपोर्टरी आया था, बेरीज का नाम लिखा तो एक रिपोर्टरी इसकी बात कर लेते हैं, इस बार क्वेश्चन भी आया था। बेरीज आई रिपोर्टरी, बेरीज आई रिपोर्टरी
किस ईयर में आया? कैन एनीवन टेल? 1873. यस, वेरी गुड। एंड दिस वाज द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, इस बार एआईपीजेट के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ओके, और हेयरिंग सिम्टम्स ऑफ आवर रिपर्टरी ऑफ द आवर गाइडिंग सिम्टम ऑफ मेट्रिया मेडिका, कब आया था ये एक बार चेक कर लेना, 1905 में है। ओके, एक बार लेकिन चेक कर लेना हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम का। ओके, एंड दिस ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर्ड अंडर क्लास 3। ओके, जैसे ब्रोटेनम क्लास 3 में। बट व्हाट डॉक्टर जेम्स टायलर हैज सेड about this medicine in his book? The name of the book is Lectures on Homeopathic Materia Medica. J.T. Kent has said that this remedy is useful in complaint of a pale, sickly people and patients who have been weak for many years, who have inherited phthisis. Means those person who are suffering from the so much weakness, and he was suffering from the phthisis. क्या होता, बहुत पहले टीबी और क्षय रोग हुआ है, क्षय रोग हिंदी में बोलते हैं थाइसिस को, एंड उसके वजह से अगर बहुत वीकनेस है, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट दिस मेडिसिन। ओके, okay, and if you are talking about the acetic acid, you will find emaciation, weakness, anemia, and loss of appetite and burning thirst you will find, and copious pale urine will be there. I said that this acetic patient is acetic acid is a सिरका, एक टाइप का सिरका होता है, and vinegar होता है acetic acid patient, and this patient is suffering from phthisis, and because of phthisis this patient is having a so much weakness. अगर पेशेंट को थाइसिस बीमारी एंड उसके वजह से वीकनेस हो रहा है, तो हम लोग एस्टिक एसिड सोच सकते हैं। एंड दिस पेशेंट इज हैविंग अ क्लोरोसिस इन यंगल, कई बार एनीमिया होता है यंगल में, देन वी कैन थिंक अबाउट एस्टिक एसिड। एंड दिस पेशेंट इज हैविंग अ कंफ्यूजन ऑफ माइंड, डजंट नो हर ओन चिल्ड्रेन एंड फॉरगेट्स व्हाट रिसेंटली हैज बीन। ऐसा पेशेंट जो अपने पेशेंट को ही, अबे तू कौन है, तू कौन है, अपने बच्चे को बोला तू कौन है बे, कहां से आ गया। This patient doesn't know his own children. He will forget कि मेरा ही औलाद है, मेरा ही बच्चा है. He will forget. And this is mentioned in the book Lectures on Homeopathic Materia Medica, which is written by James Tyler Kent. And कब लिखा गया था? 1904. And कितनी मेडिसिन है जेटी केंट में? 187 मेडिसिन. ओके, ये सब क्वेश्चन आता है. Okay, so this patient is having a confusion of mind. See, cannot recognize his own children, doesn't know his own children कि मेरा ही औलाद है, मैंने इसे पैदा किया, ये भूल जाएगा. This is a acetic acid patient, and this patient will always forget what the recently has been happened. पता चला कि अभी 2 घंटे पहले क्या खाना खाए थे, भूल गया क्या खाया था. अभी किसी को 10,000 रुपया दिया, he will forget. He has given 10,000 rupees to somebody and he will forget. अरे मैंने पैसा दिया था, क्या दिया, भूल जाएगा. But these symptoms we can correlate with the another medicine, that is absinthium is the medicine. Can anyone tell कौन सा medicine? Absinthium. Absinthium is the medicine. In absinthium you will find the forgets what the recently happened to the patient. क्या हुआ है वो भूल जाएगा. लेकिन what is the difference between acetic acid and that absinthium? दोनों में डिफरेंस है कि एसिटिक एसिड पेशेंट अपने बच्चे अपने औलाद को ही नहीं पहचान पाएगा, लेकिन एब्सिंथियम क्या करता है कि क्या होता है ना, 2 रुपए का पेन चुरा लेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोमेनिया. द पेशेंट विल स्टील द थिंग्स व्हिच आर नॉट हैविंग वैल्यू. 2 रुपए का पेन, एक पेंसिल देखेगा पेंसिल चुरा लेगा. तुम्हारे रूम में आया, अरे रबड़ है, रबड़ चुरा लेगा. ही विल नॉट गोइंग टू स्टोर. वो तुम्हारा लैपटॉप नहीं चुराएगा, आईफोन नहीं चुराएगा, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, उस क्या चुराएगा, पेंसिल चुरा लेगा जिसकी कोई कीमत ही नहीं है. द पेशेंट इज एब्सिंथियम. क्लेप्टोमेनिया इसको बोलते हैं. ओके, क्लेप्टोमेनिया. द पर्सन विल स्टील द थिंग्स व्हिच आर नॉट हैविंग वैल्यू. जिसकी कोई कीमत ही नहीं है वही चुरा लेता है. दैट इज क्लेप्टोमेनिया. ओके. Another symptom is adopted to the pale, lean person with a lax flabby muscle and face pale and waxy. You can see the face of the patient.
कैसा दिखेगा, ऐसा चमकेगा. Why? Because there will be a waxy colored of skin you will find, and similar symptoms you will find in more medicine. Can anyone tell ऐसा symptom और किस medicine में मिलेगा? Can anyone tell? You will find in natrum mure. Natrum mure is the patient. Natrum mure में मिलेगा. Natrum mure. Sorinum is there. Sanicula is there. Okay, Sanicula. Natrum mure, Sanicula, and tuberculinum is also there. Okay. You will find pale and waxy. You will find, and arsenic is also there. Okay. In arsenic you will find arsenic album. Arsenic album. Okay. Hemorrhage from every mucous outlet, nose, throat, lungs, stomach, bowels, uterus. Suppose if there is a discharge, bleeding हो रहा है, बहुत ज्यादा bleeding, either nose से हो रहा है, either lungs से हो रहा है, फेफड़े से हो रहा है, uterus से हो रहा है, vagina से हो रहा है, then we can think about this medicine. And sometimes having a vicarious traumatic epistaxis is there. Vicarious menstruation is also there. Okay. So vicarious traumatic epistaxis is there. But this point I want to correlate with the anatomy. अगर नाक से ब्लीडिंग हो रहा है तो कौन से आर्टरी से होगा, ये क्वेश्चन आता है. एनाटॉमी से हम लोग कोरिलेट करेंगे. कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ आर्टरी? Sphenopalatine artery. वेरी गुड. स्फीनोपैलेंटाइन आर्टरी इज देयर. ओके. कई बार क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ एपिस्टेक्सिस द नेम ऑफ द आर्टरी इज व्हाट. ओके. तो नेम ऑफ द आर्टरी इज स्फीनोपैलेंटाइन. ओके. But there is written a vicarious traumatic. This vicarious we can correlate with the another medicine. Vicarious menstruation is there. What is the meaning of vicarious menstruation? मेंसेस का आज टाइम है, लेकिन मेंसेस तो नहीं हुआ, लेकिन नाक से जरूर खून आ गया. ठीक है, नाक से आ गया, पाइल्स हो गया, लेकिन नॉट ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना. नॉट menstruation is there is no menstruation, but क्या होगा, उसका ब्लीडिंग और कहीं से आ जाएगा, कान से आ जाएगा, मुंह से आ जाएगा, लेकिन menstruation का ब्लीडिंग नहीं आएगा. that is the meaning of vicarious menstruation. where it is written, can anyone tell which medicine? Brania alba. Yes, very good, excellent. Brania alba. And one more medicine is there, that is phosphorus, and one more medicine is there, that is natrum sulf. Okay, ये याद रखना है आपको. Marasmus and other wasting disease of children means marasmus तो होगा acetic acid patient में. Why? Because this is suffering from a severe kind of problem. Suppose patient को एड्स हो गया, HIV हो गया, या tuberculosis हो गया, उसके वजह से अगर marasmus होता है, then we can think about acetic acid. And this marasmus we can correlate with the tuberculinum. In case of tuberculinum you will find rapid emaciation. You will find, okay, rapid emaciation होता है tuberculinum में. Okay, and rapid emaciation you will find in the arsenic also. arsenic में भी है, arsenic album and plumbum metallicum भी है. Okay, plumbum met, okay, etc. Thirst, intense burning, insatiable event for a large quantities in a dropsy and diabetes and chronic diarrhea, but no thirst in fever. Why this patient is having a drops? Why this patient is having a insatiable even for a large quantities in a dropsy? Because this point we can correlate. Suppose if the patient is suffering from a diabetes mellitus with a practice of medicine, so what we will find? Polydipsia, polyuria and polyphagia. Okay, तीन कंडीशन होता है, polyuria, polydipsia, okay, polydipsia and polyphagia. Okay, तो क्या होगा, पॉलीफेजिया होगा, पॉलीयूरिया भी होगा, पॉलीडिप्सिया भी होगा. तो जितना ज्यादा भूख लगेगा, क्योंकि कंजप्शन हो रहा है, उसका ग्लूकोज कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, यूरिन से निकल रहा है, तो उसको क्या होगा, ग्लूकोज कम होगा बॉडी में, तो क्या होगा, भूख लगेगा. ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए तो क्या करेगा, खाना खाएगा कुछ. ठीक है, खाना तो खा लिया. पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा पेशाब होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्यास भी लगेगी, बॉडी ड्राई होगा.
ड्राई होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा तो पॉलीडिप्सिया भी होगा. दैट्स व्हाई दिस पेशेंट इज हैविंग अ insatiable even a large quantities especially in dropsy and diabetes. Okay, but fever होगा तो उस समय इसको नहीं लगता है प्यास. This point we have to keep in mind. Okay, कई बार क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन कैसे मेट्रिया में आता है, यहां से थर्स्ट उठा लिया और यहां से ये लाइन उठा लिया, थर्स्ट बट नो थर्स्ट इन फीवर, तो आंसर विल बी एस्टिक एसिड. ओके, अब कई बार लाइन यहां से उठा लेगा, पूरा उठा लिया लेकिन यहां से थर्स्ट मेंशन किया बट यहां से पूरा उठा लिया, थर्स्ट एंड insatiable even for a large quantities in dropsy, diabetes and chronic diarrhea, so answer will be acetic acid. Okay, but dropsy with thirst होगा तो again acetic acid and epocinum is the medicine. epocinum में भी है. okay, epocinum cannabinum. But dropsy but no thirst is there, the medicine is, can anyone tell which medicine? Apis mellifica. Yes, very good. Apis mellifica is there. Very good. Excellent. And great prostration after shock. Okay, so if we were talking about the thirst, okay, na? This point I want to correlate with another medicine. If there is written burning thirst for a large quantities of cold water, miss पानी पिला दो लेकिन उसका प्यास ही नहीं जा रहा है. Burning thirst. Where it is written? कौन सा मेडिसिन में लिखा है? Aconite. Yes, aconite nepalus is there. Very good. But if the symptom is there, अगर symptom पूछता है great thirst at a long interval, ऊंट होता है ना, ऊंट जैसे राजस्थान में ऊंट होता है, एक बार पानी पिया 10 लीटर, he will drink a 10 to 15 liter in a one time, but दूसरी बार कब पिएगा? 5 से 6 घंटे बाद. So can anyone tell me the name of medicine? Brahnia. Yes, very good. Brahnia is the medicine. Very good. But I'm asking another symptom. Thirst for large quantities of cold water. Can anyone tell? Which medicine? Phosphorus. Podophyllum, not phosphorus. Podophyllum. And another medicine is there, Sencris Contotrix. Okay. ये भी लिखा है बोरिक मेट्रिया में है, Contotrix. Okay. Sencris Contotrix. Diarrhea, copious, exhausting, great thirst in dropsy, typhus, phthisis with night sweat. Suppose if the patient is coming to you and that patient is having a watery stool, what is the meaning of diarrhea? If the patient is having a watery stool more than 5 to 6 times in a day, यदि किसी व्यक्ति को 5 से 6 बार वाटरी स्टूल हो रहा है तो हम उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं. और डायरिया कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा. Which is exhausting, इतना ज्यादा, এখন কিছু করতে পারবো না, अब कुछ नहीं कर सकता, मैं एकदम थक गया, मम्मी थक जाओ, प्लीज डोंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, एग्जॉस्टेड फीलिंग इज देयर. दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉशन. एंड ग्रेट थर्स्ट विल बी देयर एंड देयर विल बी अ नाइट स्वेट, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगा. बट दिस पॉइंट आई वांट टू कोरिलेट विद द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. कोई ऐसी बीमारी बताएगा जिसमें नाइट स्वेटिंग होता है? व्हाट आर द डिजीज कंडीशन where we will find night? Tuberculosis. Yes, TB is there. Very good. Brinda and osteosarcoma is there. HIV is there. Okay, etc. These are the condition where you will find night sweating is there. Okay. But this point I want to correlate with the materia medica. Profuse sweat during a waking hour. जब तक जगा रहेगा तब तक उसको स्वेटिंग होगा. कौन सा मेडिसिन है? Sambucus is the medicine. Thuja. Not thuja. Thuja only there will be a sweating, especially uncovered part. जहां पे ढका नहीं रहता है, so there will be a sweating. Okay, especially on uncovered part. But there will be a sweating, especially when closing the eyes. जैसे आंख बंद करेगा, sweating, पसीना चालू. Can anyone tell the name of medicine? Sweat as soon as he close the eyes. Which medicine? Conium maculatum. Canicula. Conium maculatum and Cinchona is there. Okay. Cinchona. Okay. True croup, hissing respiration, cough with inhalation. Last stages is there. Okay. So you can see
if you will find there will be this type of cough, you will find the patient is having the cough is there, the patient is having a true cough inhalation is there, especially in the last stages of the thysis. Then only we can think about this medicine. Another, cannot sleep lying on back. Which medicine? Can anyone tell? Ruta, What? Ruta? In Ruta, what is written there? Can anyone tell? backache relief by pressure. Not pressure. Backache relief by lying on back. और मैंने क्या पूछा? Can not sleep lying on back. So Lobelia inflata, not Lobelia inflata. That is acetic acid. Okay. Lying on back. Okay. Lying on back. The medicine is, here you can say the patient is lying on back. The medicine is arsenic. Okay. Arsenic. Okay. But cannot sleep on lying on back. ये हो गया ये मेडिसिन एस्टिक एसिड. ओके, ये पेट के वश होता है. ठीक है. एस्टिक एसिड, अमोनियम कार्ब एंड मेडोरिनम है. ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज ब्रेन. ओके. And this patient is always feels better, especially lying on abdomen. You can see in the picture. Okay. Okay. So this patient is always feeling better, especially lying on abdomen. But there is a one patient who will be sleeping, but he will keep his hand on forehead. Okay, हाथ सर पे रख के सोता है. Can anyone tell me the name of medicine? सर पे हाथ रख के सोता है. कौन सा मेडिसिन? Sleep with, put the hands over the Madorinum, medorinum and pulsatilla is there and belladonna is also there. Okay, ये तीन मेडिसिन है जहां पे पेशेंट सर पे हाथ रख के सोता है. Okay. Hectic fever, skin dry and hot, a red spot on left cheek and drenching night sweat. You can see if you're finding red cheek is there. Okay. Red cheek is there and with night sweat is there. Drenching night sweat. ऐसे लगता है पानी में भीग गया हो. There is so much sweating. The patient is feeling like that. I took bath in the sweat. ऐसा लगता है पसीने में नहा लिया हो. Then only we can think about this medicine. Okay. Drenching night sweat. I will go little fast. Okay. Acetic acid has the power to liquefy the albuminous and fibrinous deposit. Suppose if the patient is having a sometime deposition of the fibrinous or fibrin deposition is there, it will dissolve, it will liquefy that deposition. Okay, so we can think about the acetic acid, and this acetic acid is also known as vinegar and sirka. Sirka हिंदी में कहते हैं. And this medicine we can think internally and externally. Okay, especially in epithelial cancer. Okay. But here the word is written externally and internally. So this point I want to correlate with the organ of medicine. Dr. Hadman has this advised the medicine internally and externally, especially in which case? कौन से केस में एडवाइस किया है? वाट्स के केस में. ओके. कहां पे लिखा है ऑर्गेनन में? कैन एनीवन टेल? ये क्वेश्चन आता है 282 के 6th एडिशन में है, फुटनोट में. ओके, फुटनोट में ये याद रखना. And psychosis with nodule and formation in the joint. Suppose if there is a formation of the nodule and joints, so we can think about this acetic acid. It will liquefy the deposition. Okay. क्या होगा? जो जमा रहेगा उसको लिक्विफाई कर देगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर प्रिस्क्राइबिंग दिस मेडिसिन. ओके. अच्छा, इरिटेबल और वरीड अबाउट द बिजनेस. इतना चिड़चिड़ा होता है, अरे मेरा बिजनेस लॉस हो रहा है, बिजनेस मेरा कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है. That's why this patient become a worried. But if there is a sleeplessness, intense sleeplessness is there after loss of a business and embarrassment is there, उसका बिजनेस घोटाला में चला गया या नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, शेयर मार्केट घट गया, अरे उसको नींद ही नहीं आ रहा है, then only we can think about the medicine that is calibrome. Calibrome is the medicine and hyoscyamus is there. Okay, hyoscyamus. और कौन सा मेडिसिन है? कैन एनीवन टेल? अम्ब्राग्रेशिया. Brania. अम्ब्राग्रेशिया.
नॉट ब्राइनिया। ब्राइनिया में क्या होता है, पेशेंट बिजनेस के बारे में सोचता है, हमेशा ही विल थिंक अबाउट द बिजनेस। लेकिन इन सब में एम्बेरसमेंट और उसका नींद भी चला जाता है बिजनेस नुकसान की वजह से। ओके। अच्छा, डायबिटीज विथ ग्रेट थर्स्ट एंड डेबिलिटी। डायबिटीज में क्या मैंने बताया, पॉलीयूरिया, क्या ट्रिपल पी होता है। कैन एनीवन टेल क्या होता है ट्रिपल पी? Polyuria, polyphagia, polydipsia. यस, वेरी गुड। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। ओके, पॉलीफेजिया। तो अब ज्यादा यूरिन अगर निकलेगा तो यूरिन के साथ क्या होता है, ग्लूकोज निकल रहा है। अब ग्लूकोज बॉडी से निकलेगा तो क्या होगा, कमजोर फील होगा। दैट्स व्हाई दिस पेशेंट इज हैविंग अ डेबिलिटी, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाता है। ठीक है। 1x solution like acetic acid, 1x solution will often soften and cause the formation of the pus. You can see if you will prescribe, it will causing the formation of the pus. Okay, so we can think, and these symptoms we can compare with another medicine. Suppose if you are finding this type of rate congestion is there, then we can think about the medicine belladonna. But if this type is there but very sensitive to touch and pain is there, then we can think about the hepasurf. Okay, ये basic difference है। एनीमिया ऑफ नर्सिंग मदर, दोज पीपल हु आर नर्सिंग टू द बेबी, जो माँ बच्चे को दूध पिला रही है और उसको अगर एनीमिया हो जाए तो हम लोग एस्टिक एसिड सोच सकते हैं। ओके, वी कैन थिंक अबाउट द एस्टिक एसिड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। ओके, साइडर विनीगर, जो सिरका, वो कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग को भी एंटीडोट कर देता है या मेडिसिन को भी एंटीडोट कर देगा। ओके, and follows well after cinchona in hemorrhage after the dialysis. Suppose if the patient is suffering from the hemorrhage, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, एंड अगर हमने सिंकोना दिया उसके बाद we can think about the acetic acid is the medicine, या ड्रॉपसी में अगर डिस्टेलिस दिया है तो उसके बाद हम लोग एस्टिक एसिड सोच सकते हैं। एंड दिस मेडिसिन इज हैविंग एग्रोवेशन symptom after the arnica, belladonna, lachesis muscle, especially in headache from the belladonna. अगर belladonna की वजह से अगर headache हो रहा है तो especially we can think about this medicine and along with that acetic acid. Okay, thank you everyone. If there is any doubt you can ask me, and you can text me, you can